फ्रेंड्स, आपको मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम करने वाले सिविक्स का 4th चैप्टर द इंडियन जुडिशरी सिस्टम। ये हम करने वाले वर्क बुक सॉल्व अपनी ऑफ क्लास 8 हिस्ट्री एंड सिविक्स की। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप चैप्टर में से फॉर एग्ज़ाम अगर आप चैप्टर पढ़ने से अच्छा आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ के पढ़ लेंगे सो आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी एग्ज़ाम लिखने में। सो लेट स्टार्ट। जुडिशरी है इधर, मैं आपको अभी बस दिखा देती हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स पे स्टार्ट करते। देखिए जुडिशरी है, उसका नीड ऑफ लॉ है, एंड देन नेसेसरिटी ऑफ जुडिशरी सिस्टम है, ये देखिए। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी। फिर इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी में आपको यहाँ पे कुछ चार्ट दिख रहा है, ये वाला। सो ये वाला चार्ट भी आप कीजिएगा, ये आपको एग्ज़ाम में पक्का आएगा। और सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट आप देख सकते हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, प्रोविज़न फॉर प्रोटेक्टिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। और यहाँ पे मैं बस इम्पॉर्टेंट जो डार्क बोल्ड हैंड राइटिंग में किया बस वही पढ़ रही हूँ, बाकी तो सब आपको मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया ही है चैप्टर। सो यहाँ पे देखो, लिबर्टी एंड इंश्योर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज जुडिशरी एक्टिविज्म। उसके बाद फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे देखिए आप। उसके बाद जुडिशरी रिव्यू भी है हमारे पास। उसके बाद सीधा एग्जाम्पल है जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 81 पे आपको दिए गए हैं, तो आप इधर देख लिए, वही सेम पैरा है। उसके बाद पब्लिक इंटरेस्ट लिजिस्लेशन PIL है। उसके बाद है हाई कोर्ट है, ये देखिए हाई कोर्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिजिस्लेशन PIL शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। देन वंस अगेन आ गया टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 81, जिसमें आपको मुंबई हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट दिया है, कोलकाता हाई कोर्ट दिया है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट दिया है। उसके बाद गुवाहाटी हाई कोर्ट दिया है, ये देखिए 5 टाइप्स ऑफ हाई कोर्ट दिए हैं हैविंग। सो उसके बाद फंक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स है, ये देखिए डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद है द ब्रांचेस ऑफ लॉ इन इंडिया, सो सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ। उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन जुडिशरी में आएगा, आपको यहाँ पे देख सकते हैं 7 पॉइंट का। अब इतने पॉइंट अगर आप कवर कर लेंगे ना सो आपको बिल्कुल भी बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने तक। चलिए अब हम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द स्टेटमेंट। तो लॉ आर मेड बाय डैश, तो लेजिस्लेचर, इधर ऑप्शन है लेजिस्लेचर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ऑप्शंस आर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर। When the common man benefit from the value of the freedom, equality and justice is lead to the winding and depending of democracy. Options value, democracy, judiciary, law. So आप देख सकते हैं। तो हमारा भी नेक्स्ट वाला है डैश हेल्प टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ पीपल, तो जुडिशरी। ऑप्शंस प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जुडिशरी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए क्लियर दिख रहा है। यस, द पार्लियामेंट हैज़ द पावर ऑफ इस्टेब्लिश टू हाई कोर्ट इन एवरी स्टेट टू इंडिया। ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। करंटली देयर आर 24 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। 20 ऑप्शंस आर 20, 29, 24, 22। उसके बाद फाइंड एंड राइट क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि नेचर ऑफ जुडिशरी इन इंडिया। तो इन आंसर क्या उसके, इंटीग्रेटेड सिस्टम। सेकेंड, इन द क्रिमिनल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइल फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR। ओके, द डिस्ट्रिक्ट जज आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। फिर द हाई कोर्ट जज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। उसके बाद यहाँ पे आपको है कंप्लीट द चार्ट करके दिया है, कंप्लीट द
कॉन्सेप्ट बिलो यहाँ पे देख सकते हो। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस और डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसके बाद इंडियन जुडिशरी प्रोटेक्ट टू इंडिविजुअल फ्रीडम, फेडरल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी। इसके बाद एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है जुडिशरी रिव्यू। इफ एनी लॉ पास बाय द लेजिस्लेचर ऑफ एनी एक्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव violates any provision of the constitution, that law or act is declared illegal and struck down by the court. This power of the court is known as judiciary review. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL refer to litigation field on issue of public importance by individual citizens, social organization or non-governmental organization on behalf of all public. Next question है write short note on. First है civil law. This law deal with conflict with affect or interference with the rights of a person. For example, divorce, conflict regarding land and properties, rent argument, etc. Next है criminal law. Criminal serious crime are dealt under criminal law. For example, thief, robbery, murder, etc. In this case, the first step is to file a first important report FIR with the police. The police investigate the matter and then the petition is filed in the court. In this case, charge are provided. If the charge are provided, there are provision for severe punishment. Judicial activism. Traditionally, the court has settled the dispute whenever they are approached for that purpose. Now the court has tried to provide legal protection to marginalized section in society, women, tribal worker, farmer and children. ये देखिए आंसर्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। एक्चुअली क्या है ना, ये चैप्टर काफ़ी छोटा है बट इसके अंदर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी है, जैसे कि हाई कोर्ट इज़ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जहाँ पे वर्ब बुक में स्टार्ट नहीं है ना वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। तो हाई कोर्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन confers the parliament with the power of establish a high court in each constitution state in the union. Normally each state where the population and area of the state is less, one high court has jurisdiction over more than one state. For example, the Bombay High Court jurisdiction cover the state of Maharashtra and Goa. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जुडिशरी इन इंडिया is an integrated system where Supreme Court is at the apex position. The Chief Justice of India CIJ is the head of the Supreme Court of the India. The Supreme Court of India is located at New Delhi. The President appointed the Chief Justice of India. Next question is question number 6. Explain the following statement with reasons. First, the judiciary in India is an integrated system. India is a union of states. The center and the constituent state have a separate legislature and the executive, but there is no judiciary system for the whole of India. The Supreme Court is the apex court under which there are high court. Second question are, the constitution had made provision for independence of judiciary. Answer, the constitution wants judiciary to work freely without any kind of pressure. The independence of the judiciary is maintained so as to enable the judge to freely carry out the function of giving justice. The Indian justice had made a significant contribution in the development of the country. The Indian judiciary has always given importance to social value while protecting. एक्चुअली ना नेक्स्ट क्वेश्चन पीछे था तो पेज मैंने टर्न किया. नेक्स्ट क्वेश्चन आर, द कॉन्स्टिट्यूशन इज
It had exposed strong practice like superstition, discrimination, injustice to weaker section, etc., and forced the legislature to pass law against them. Common people have a lot of respect and trust in the judiciary review. Question number 7. Answer in brief. Why are law necessary in society? Opinion, thought, perspective, belief, faith, and culture differ to person. If people are tolerant, they can avoid conflict. But if difference of opinion are very sharp, they may lead to conflict. They should be resolved impactfully and in accordance with the law. For this purpose, an unbiased judiciary maturity is required. Next question is inquirement, the function of Supreme Court. As a federal court, it has the responsibility to settle dispute whenever dispute between the union and the state, between state and the union, between one state to another state. It may also give order for protection of the fundamental rights of citizens, to review decrees and order of lower court, and also review its own decision. Next question, which are the provisions that preserve the independence of the judiciary? Judges are appointed by the president. This helps to avoid any political pressure. Second point, the salaries of judges are drawn from the consolidated fund of India. Third, the parliament cannot discuss the decision of the judge. However, it has the right to remove the judge from their position through the impeachment procedure. इसके बाद फोर्थ पॉइंट, जजेस enjoy security to ensure they cannot be removed from the post for territorial reason or for political motive. Fourth question, what are the eligibility criteria for appointed of Supreme Court judge? She must have a citizen of India. She must be a legal expert. She must have several as a high court judge or an experienced advocate in the high court. The fifth question and the last question of this chapter, mention the function of high court. The supervise over the district and other lower court in the jurisdiction, to maintain control over the function of the lower court, to give order, to protect the fundamental rights of the citizen. So friends, इस तरीके से हमारा सिविक्स का जो कि चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, द इंडियन जुडिशरी सिस्टम, वो हो चुका है हमारा ख़त्म. तो आप प्लीज़ बताना आपको ये कैसा लगा. और ये पूरा चैप्टर हो चुका है फिनिश. ये देखिए पूरा वर्कबुक हमने सॉल्व किया है और मैंने आपको आंसर्स को रीड करके बताया चैप्टर, और मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिया. तो अगर आपको एग्ज़ाम में चैप्टर पढ़ने को टाइम लगता है तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लीजिए जो आपके वर्कबुक में मैंने अभी आपको दिखाया. उससे आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा. ओके, थैंक यू, बाय. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल लीला गुप्ता and like my videos also. Thank you for